Hello students, this is Neha Miss here. Hope you all are doing well. Now I have prepared this video especially for my students of standard 8, and during this lockdown against corona, I want the students to utilize their time to the fullest. In this video, I'll be teaching you the first topic of the chapter resource, which is your first lesson from the geography section of your SST box. So to begin with, the name of the chapter is resource. So the first thing we need to understand is the meaning of resource. The definition says anything that can be used to satisfy a need is a resource. Example, water, chair, car, etc. अब कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहेंगे. द हिंदी वर्ड फॉर रिसोर्स इज साधन, या फिर आप उसे स्रोत भी कह सकते हो. ना वाटर, चेयर, कार एंड ऑल द थिंग्स दैट यू सी अराउंड अस एंड आप उसका इस्तेमाल करते हो, वो सब रिसोर्स है. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू मार्क ओवर हियर इज दैट all those things have some utility. Now, what is utility? Utility is what makes an object or substance a resource. Means resource का एक feature क्या है, characteristic क्या है कि उसमें utility होनी चाहिए. अगर उस चीज़ में, उस substance में utility नहीं है तो वो resource नहीं कहला सकती. Now, next term is value. Value means worth. Example, metals have some economic value. You can take any other example, whether it is a chair or a water bottle or electricity. All these things have some economic value. Economic term जो है, इसका हिंदी वर्ड जो होता है वो आर्थिक, मतलब कुछ मॉनेटरी वैल्यू है इसका. It has got some, you can you pay for it, then only you use it. And in contrary, you can see that a landscape does not has a economic value, but both satisfy human needs. Now we'll be talking about examples like landscapes later, जिसकी economic value नहीं होती है लेकिन वो दूसरे तरीक़ों से हमारी needs को fulfill करती है. Like for example, you can say it has got aesthetic value, मतलब इट हैज़ गॉट सम ब्यूटी, और उस ब्यूटी को हम कॉमन पीपल इस्तेमाल कर सकते हैं. एक पेंटर इस्तेमाल कर सकता है. कैसे? ही कैन टेक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट लैंडस्केप एंड मेक अ पेंटिंग आउट ऑफ इट. अ फोटोग्राफर कैन टेक अ पिक्चर ऑफ इट. तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस. But now for your standard, for your class, you need to know about economic value. We will not be going to the aesthetic value or some other kinds of values. Now, some resources become economically valuable with time. अब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो at present उसकी कोई economic value नहीं होती, लेकिन कुछ समय के बाद what happens, that substance turns into a resource. For example, grandmother's home remedies, जिसको आप हिंदी में जानते हैं दादी माँ के घरेलू नुस्खे. तो ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है. घर पे आप कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके, कुछ मसाले हो गए, उससे हम लाइक कोई दवा बना लेते हैं और वो हम कुछ नुस्खे जैसे काम आता है. And it's very less in cost, या फिर no cost at all. You have it at home and you use it for some purpose. But those same remedies can attain economic value when a medical firm gets a patent on it. Like you might have heard about turmeric or tulsi, जिसके कुछ patents दूसरे countries ने ले लिए हैं. And now in order to use it, what we have to do, we have to pay it. मतलब जैसे आप लोगों ने, it is similar to copyrights. Okay, आप लोगों ने सुना हो copyrights के बारे में, that कोई भी original चीज़ है उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. You have to pay something, then only you can utilize it. So same thing is with patents. Now patent, the word patent means exclusive right over any idea or
invention. Now, value and time and resource. So यहाँ हमने क्या समझा कि time की वजह से क्या होता है, sometimes a substance turns into a resource. So towards the end of this topic, you can understand that time is also an important factor that can change a substance into a resource. Now, in the next topic, in the next video, we will be dealing with technology, how technology plays an important factor in changing a substance into a resource. So, for the time being, that's all in this video. Thank you.